PCs, laptops, this router is having IP address that is 192.168.100.1. This is configured on this port. 192.168.100.2 is configured on laptop 1. 192.168.100.3 configured on PC 1. 192.168.100.4 configured on PC 0. Similarly, 192.168.101.1 we are configuring on this FS0/0 port. 192.168.101.2 we are configuring on this port. 192.168.102.1 configured on this FS0/1 port. 192.168.102.2 configuring on FS0/0 port. Then 192.168.103.1 we're configuring on this port. Then server 2 we're configuring 192.168.103.2, and this server 1 is configured with 192.168.103.3. We are not configuring any IP address on the switch. Okay, so switch is not configured with any type of IP address here. So starting with the first configuration of laptop 1, click on this. Click on the system first. You will get this, okay, this window. Click on the desktop. You will get IP configurations here. Click on the IP configurations and type the address. That is 192.168.100.2. Then subnet mask automatically will come here because it's a class C IP. You are seeing class C subnet mask. Then gateway address is this IP address of gateway 1, 192.168.100.1. This is considered as default gateway. All the machines, PC0, PC1, all these machines default gateway address will be this router, this IP. Okay, you configure this IP address here, 100.1. Then close it. That's it. Your IP configuration is done. Close it. Close it. Then open PC1. Go to desktop. Do the same thing. IP configurations. Type the IP here, 192.168.100.3. Subnet mask will automatically come. And gateway address. Gateway address means this IP, 192.168.100.1. And close it. Close it. This PC configuration is done. PC0, open it. Go to desktop. Go to IP configurations. Configure the IP address 192.168.100.4, subnet mask, and gateway. Gateway is this IP 100.1. So whatever machines you have in your LAN 1, all the machines gateway IP will be this IP, this router. Close it. Close it. Our 3 client machines configuration is done. We're moving on to server. Click on the server. Go to desktop. Same thing. IP configurations. Then configure the IP address here. That is 192.168.103.2. Subnet mask will automatically come. Then the gateway address. Gateway address is this 192.168.103.1. And close this. This server IP configuration is completed. Then open server 1. Go to desktop. IP configurations. Configure this machine IP 103.3. Subnet mask and gateway. Gateway address will be 103.1. So once you have performed all these clients IP configuration and servers IP configuration, then you will configure these routers. You will have to configure all this IP address on the router. Okay. So doing the router configuration, you will have to know something called iOS, the Internet Network Operating System.
So this is your inter-network operating system called iOS, which is nothing but the OS of your Cisco router and switches. Means the operating system which is running on your Cisco router and switches. This operating system is called iOS. Using this operating system, you are going to configure the routers and switches. So when you work with inter-network operating system on your Cisco router and switch, you have to deal with three main modes. These three main modes we have, that is user exec mode, privilege exec mode, global configuration mode. These are considered the main modes of your Cisco IOS. And we have some sub-configuration modes called interface configuration mode, line configuration mode, router configuration mode. These are called sub-configuration. Means it is coming from the global configuration mode. So all these three modes are basically coming from this mode. That is why we call it sub-configuration modes. When you will work with Cisco IOS, then you will have to deal with all these modes, specifically these three main modes. So every single mode is represented using certain symbols in iOS. User exec mode is represented using greater than symbol. Privilege exec mode is represented using hash symbol. Global configuration mode is represented using config hash symbol in iOS. Whereas interface configuration mode is represented using config-if hash symbol. Line configuration mode is represented by config-line hash symbol, and router configuration mode is represented by config-router hash symbol. These symbols you need to remember because based on that only you will be doing configurations. So always, whenever we need to go from user exec mode to privilege exec mode, or from privilege exec mode to global configuration mode, we have to type commands. We have to type commands, and we have to go from this mode to this mode, or from this mode to this mode, or from this mode to this any of these modes. You are basically going from one mode to another mode by typing commands. So user exec mode to privilege exec mode, if you want to go, you are using enable command. This is the command to go from this particular mode to this mode. Then once you are in this mode, then from this mode to global configuration mode, you are using configure terminal command. This configure terminal is used to go from privilege mode to the global configuration mode. Similarly, we have a command called exit. This exit command is used to go backwards step by step. Going backwards means if I want to go from global configuration mode to the privilege exit mode, then I can use this exit command. It will take me to the previous mode step by step. Similarly, if I want to go from privilege to user exec mode, then again I will have to type exit, and it will take me to this particular mode. Exit command you are using to go backwards step by step. Okay, you cannot directly go from this mode to this mode directly. You cannot go. So always you will have to go step by step backwards. But there is a command called end command, which we use in order to go to the privilege mode, means to this mode, either from global or any sub-configuration modes. For example, if I am in this config router mode and if I give end command, then this command will take me directly to this privilege mode, means this mode will be skipped. It will be skipped. So normally when you use exit command, you go step by step backwards. But when you use end command, then from any sub-configuration or global configuration mode, you can directly go to the privilege mode. So this is one exception you are having, where you can skip certain modes and you can go directly to the privilege mode. So these commands always we need to remember because this is what we are going to be using. Take the screenshot of it. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें. ये तुम्हारा सिस्को iOS है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि तुम्हारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? यस सर. विंडोज लिनक्स ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट? यस सर. तुम्हारे मशीन्स पे तो तुम अपने मशीन्स
को अगर चलाना चाहते हो तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तुम्हें। यस सर। ये सुन लो, यस ये सर। तुम्हारा सिस्को राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस सर। सिस्को राउटर एंड स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। ठीक है। इनमें तीन मोड्स रहते हैं। एक मोड होता है यूजर एग्जिक का, दूसरा होता है प्रिविलेज एग्जिक, तीसरा होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और कुछ सब कॉन्फ़िगरेशन मोड्स रहते हैं। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे तुम्हारे मोड्स हैं। अभी जब भी तुम काम करोगे तुम्हारे सिस्को राउटर या स्विचेस पे, तो इन्हीं सारे मोड्स में से तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो यूजर एग्जिक मोड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यूजिंग दिस सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल से यूजर एग्जिक मोड आइडेंटिफाई करोगे। प्रिविलेज मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हैश सिंबल यूज करोगे। यस सर। ओके। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला मोड, ये वाला सिंबल यूज करोगे, कॉन्फ़िग हैश। यस सर। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉन्फ़िग हाइफन इफ हैश। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉन्फ़िग हाइफन लाइन हैश। राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तुम्हारी कॉन्फ़िग हाइफन राउटर हैश। ये सारे सिंबल्स हैं। यस क्योंकि सर। जब तुम सिस्को आईओएस पे काम करोगे तो तुम्हें सिंबल्स दिखाई पड़ेंगे। ओके। यस। ये सारे मोड्स के नाम दिखाई नहीं पड़ेंगे। यस सर। ओके। तो सिंबल्स को देख के तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्टिकुलर सिंबल कौन से मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो जब भी हम लोग एक मोड से दूसरे मोड पे जाते हैं तो कमांड डाल के जाते हैं। तो ये एनेबल कमांड से हम लोग यूजर एग्जिक मोड से प्रिविलेज एग्जिक मोड पे जाते हैं। फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड डाल के हम लोग प्रिविलेज से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। तो जब भी हम लोगों को कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो इसी पर्टिकुलर साबुन मोड से से हाथ हम लोग धोवा। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके। जैसे कि तुम्हारा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हो, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे राउटर या स्विचेस पे इसी मोड से होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इसको आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर इस मोड पे हो तो फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर इस मोड पे नहीं हो तो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही तुम्हारे एग्जिट कमांड है हम लोगों के। एग्जिट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं बैकवर्ड्स पे जाने के लिए। जैसे कि अगर मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से प्रिविलेज मोड पे जाना है तो एग्जिट कमांड इधर पे डाल के मैं जा सकता हूँ इस वाले मोड पे। सिमिलरली अगर मुझे एंड कमांड यूज़ करना है तो एंड कमांड से क्या होता है कि डायरेक्टली तुम किसी भी सब कॉन्फ़िगरेशन मोड या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से प्रिविलेज मोड पे जा सकते हो, मतलब डायरेक्टली इधर से इधर। तो इस मोड को, ये जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, इसको स्किप करके जा सकते हो। तो एंड कमांड बेसिकली हम लोग इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि कोई भी सब कॉन्फ़िगरेशन मोड हो या कोई तुम्हारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड हो, इस मोड से डायरेक्टली प्रिविलेज मोड पे हम लोग जा सकें। और प्रिविलेज मोड जो होता है ये बेसिकली हम लोग वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वेरिफिकेशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करते हैं तो फिर वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके। कि कॉन्फ़िगरेशंस पे कोई दिक्कत है या फिर नहीं, वो वेरिफिकेशन से ही सामने आता है। तो दैट इज़ वाई वेरिफिकेशन मोड, दैट इज़ योर प्रिविलेज मोड, वी यूज़ इट फॉर। ये सारे तुम्हारे कमांड्स हैं और ये सारे तुम्हारे मोड्स है, ये सारे तुम्हारे सिंबल्स है जिनको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और याद रखना है, because that is what you are going to need to configure your Cisco router and switch using iOS. ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। taken the Done, screenshot? sir. Done, done. All right. Yes. So now we are going to configure our routers. So these are the commands what you need to type on your gateway one. So first of all, in gateway one, you are giving this command called enable, then you are giving configure terminal, then you are going to change the name of the router. So the name of the router is gateway one. You are giving the host name command and you are writing the name. Okay, so whatever router name you have, you write it here. Then once the name is changed, then you are configuring this interface. So that is our interface fs0/1. We're giving the IP address 192.168.100.1, subnet mask is this /24. Then no shutdown. No shutdown, why we give? Because you can see that तो this port अपना is मिल red. के सुता ली है। Red means what? The port is off. कहे If नहीं the हाँ। port is off, then the port cannot send or cannot receive any data. So what we need to do, we need to switch on the port. Okay. So to अभी switch on the हाथ port, नहीं you साफ give the हुआ no है। shutdown command.
हाथ नहीं साफ हुआ। So always when you configure any interface, you give no shutdown command. When you give on means what? It will be green. Green means what? The port is on. Red means the port is off. एसी चला के Okay. So no shutdown command always you need to give under the interface. Then you configure the second interface F0/0. This is our IP address 101.1 here. Subnet mask is this, no shutdown and exit. Basically the same structure you are following. Okay, you are going to the interface, you are configuring IP address, subnet mask, giving no shutdown, exit. Then you are configuring the other interface, giving IP address, no shutdown, exit. Then you are moving on to the next router, which is router 1. So that is our next router. The next router configuration here. तो ये तुम्हारे राउटर 1 के कॉन्फ़िगरेशन हैं. सबसे पहले एनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर होस्ट नेम इसका हमारा राउटर 1 है. फिर इसका इंटरफेस F0/0. We have an IP address of 101.2. Subnet mask is this. Then we're giving no shutdown and we're saying exit. Then we configure this interface. So this is our interface F0/1 with IP address of 102.1. Subnet mask is this, no shutdown and exit. Okay. Once you have configured all the commands, all the ports on this router will be configured with IP address. Then you move on to the next router. Next router means gateway 2. So that is our gateway 2 configurations. So in the gateway 2 also you are doing the same thing, that is enable, then configure terminal, host name is gateway 2. Then you are configuring interface F0/0 with this IP address 192.168.102.2 subnet mask. Then giving no shutdown and exit. Then you are configuring this interface F0/1 with an IP address of 103.1 and subnet mask is this, no shutdown and exit. Okay. Once you have done all these configurations, all the ports you will see green and all the ports will be configured with the IP addresses. Okay. Then you will perform routing. Okay, so we'll do these configurations one by one. First of all, take the screenshot of this gateway 1 configurations. Taken? Done, sir. Okay. Done, sir. Then router 1 configurations. Taken? Done, sir. Yes. Then gateway 2 configurations. Taken? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Done, All sir. right. So we're going to type exactly these commands on our routers. Okay. So first of all, open your router. Click on the router here. This is your router. Looks like this. Okay. So here you are getting this power on, power off button. Okay. Power on. So power on means you can see that green light. This green light, can you see? All of you. Yes, sir. Yes, Green light. This green light ज़्यादा means Yes, what? sir, yes, sir. The router is on. Okay. So you can switch off the router. You can click on this मनीष button छोटा here. है ना, You can see that green light ये is gone. छोटा है ना, It means छोटा what? है, बैठ जाइए, It is हाँ off. power इसको off. मारेंगे, बैठ जाइए। Okay. So always you can switch on or switch off your router from here. Okay. So switch on the router and go to CLI. This is your internet network operating system, which is booting right now. Once the boot is done, then you will be getting this type of option. Continue with configuration dialog. Yes or no? So here what you need to do is you need to say yes. No, don't say yes here. Always say no. Okay. Now press enter. And this is what your first mode. That is your user exit mode, represented by greater than symbol. So what you need to do here, that is, which command you need to type? Enable. Enable. So right now you are in which mode? Privilege mode. So this is your hash symbol, privilege.
From here you need to Privilege type height. configure terminal. Then you are in which mode? Config hash. Config hash means global configuration. Global configuration. So now you need to change the name of the router. You can see the name of the router is by default router. So we are going to change it to gateway 1. So you use hostname command and you say gateway 1. Now can you see the name is changed to Yes, sir. gateway 1. Yes. Then we are configuring this interface now. So what is the interface number? FA FA 0 0 slash slash 1. 1. Then we configure IP address. What is IP? 192.1. 100.1. Then type the subnet mask like this and press enter. Then no shutdown. Okay. No shutdown command is given to switch on the port. So when I Sir, give why enter, we are giving no shutdown command, sir? you will see. Just focus here on FS0 slash 1. I'm giving this command now. Can you see Yes, what sir. happened? This is green, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So see, it means what? It is on. The port is on. Yeah. Yes, So sir. that is what the purpose. Okay. No shutdown Okay. is used to switch on the port. Switch. Okay, sir. Okay. Then you say exit. Then we configure which interface? 0 slash 0. So this is our interface we are configuring. So you say the same command interface fs0 slash Interface 0. 0. You say IP address. What is the IP? 192.168.101.1. Subnet mask. 255. Here 255. no shutdown. Yes, sir. So you can see that the port is still red, right? Yes, sir. Port is still red. Still red. Why it is red? Because this port is still off. This port is off, right? Yes, sir. That's why. Yes, we need to switch on this port as well. Then only you will Yes. see both green lights. Yes, sir. Okay. Yes. So No shutdown. no shutdown and say exit. Okay. Take the screenshot of it. Okay. Done, sir. Everyone take it. सर एक बार रिपीट कर दो यही सेम कमांड से जो इधर पे हम लोगों ने किया है, यही कमांड से, यही कमांड्स इधर पे टाइप कर रहा हूँ. स्क्रीनशॉट लो इसका. सर मैं भी साइड टू साइड करना है प्रैक्टिकली या बाद में करना है? ठीक है. Then router 1. Click on router 1. Go to CLI. Then सर configure. स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया, बैक एक बार बैक कर दीजिए. एक मिनट. डन सर. ठीक है. यस सर. उसके बाद राउटर 1 पे जाना है. इसके सबसे पहले इधर पे डालो क्या? नो. उसके बाद एनेबल. उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल. उसके बाद इसका नाम चेंज करना है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस राउटर? राउटर 1. राउटर 1 डालो. फिर इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है. सो सबसे पहले इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं. इंटरफेस का नंबर क्या है? वो 10:30 बजे तक निकल जाएगा सर. आईपी क्या है इसके? आईपी है 192.82.101.2. 101.2. सबनेट मास्क डालो. 255.255.0. अभी नो शटडाउन. तो नो शटडाउन डालने से दिख रहा है अभी पोर्ट ग्रीन हो चुका है. पोर्ट ग्रीन हो गया. ठीक है. एग्जिट करो. ये खत्म हो चुका है ये वाला पोर्ट. अभी नेक्स्ट पोर्ट कौन सा है? 0/1.
सर एक इंटरफेस प्रॉब्लम और है सर, ये जो सिस्को इंस्टॉल करने के बाद नहीं है, जो लाइन 1 लाइन 2 सब लिखे हैं ब्लॉक में, इस ब्लॉक को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ लिखने पे कुछ बाहर आ जा रहा है, कुछ दूसरे वो चल लाइन में चला जा रहा है। तुम्हें सिलेक्ट मोड यूज करना है। ये देखो, ये सिलेक्ट मोड देख रहे हो, यस सर। ये वाला। यस सर। ये सिलेक्ट मोड देख के एडजस्ट कर सकते हो ना, कौन सा भी जगह पे लेके जा सकते जैसे हो। वो सर टाइप कर रहे थे ना, तो कभी कभी क्या है कि दूसरे से इसमें से नेक्स्ट वाले में चला जा रहा था, वो स्मॉल साइज में नहीं हो पा रहा था। ऐसा तो नहीं होता। देखो कौन सा भी जगह पे लिख लो, वो हाँ। उधर पे ही आएगा। यही तो आ रहा है ना, हाँ सर, तो सेम तो आ रहा है। मेरे को सर आज प्रॉब्लम हो रहा था कई बार, मतलब प्रॉब्लम ये हुआ ऐसे। फिर से कर लो। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर इधर पे डिलीट ऑप्शन मार कर डिलीट करके फिर से डाल नई तरीके से। हम्म। ओके, यस सर। आ जाएगा। एक दो बार कर लो तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों कई बार किया, इसके बाद नहीं हुआ, तो फिर जो बनाए थे उसको सेव करके फिर छोड़ दिया। डिलीट ये, अगर टेक्स्ट तुम्हारा इधर पे नहीं आ रहा है तो इस टेक्स्ट को इधर पे डिलीट मार कर डिलीट मार दो। इस टेक्स्ट को उसके लिख रहा बाद था तो दूसरे में सर चला जा रहा था, वो इस उसको थोड़ा सा स्मार्ट साइज में करना चाह रहा था, लेकिन वो सेलेक्ट होके हो नहीं पा रहा था। और नहीं, वैसे तो मैं नहीं होता। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो? यही सर 6 पॉइंट वाला, 6.2 नहीं नहीं समथिंग। नहीं, ऑपरेटिंग विंडोज का कौन सा विंडो ऑपरेटिंग 10 है सिस्टम है? मेरा सर। तो होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा। अच्छा, देखेंगे देखेंगे लास्ट पे 5-10 मिनट्स का मुझे दिखाना, देख लेंगे उसको। ओके, वी आर कॉन्फ़िगरिंग दिस इंटरफेस। इंटरफेस कौन नंबर क्या है? इंटरफेस f0/1, राइट। उसके बाद तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.102.1। सामने 5 डालो, नो शट डाउन डालो एंड एग्जिट करो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। Yes, sir. ठीक है, लास्ट वाला राउटर है गेटवे 2। गेटवे 2 पे क्लिक करो, CLI पे जाओ, कमांड लाइन इंटरफेस नो टाइप करो, फिर एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम। या होस्ट नेम क्या होगा? गेटवे 2। फिर तुम्हारा इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहले? 0/0। तो ये रहा इंटरफेस f0/0। IP 192.168.102.2 सबने पास कहा ये, और नो शटडाउन एग्जिट। ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अभी नेक्स्ट इंटरफेस कौन सा है? 0/1। तो इसको कॉन्फ़िगर करो। IP 103.1 सबनेट मास्क डालो, नो शटडाउन एंड एग्जिट। बस ये हो चुके हैं तुम्हारे सारे राउटर्स के कॉन्फ़िगरेशंस। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Taken, right? So now what we are going to do, as you can see that all the ports are green on the routers. We are going to perform verifications. अभी verify करेंगे। Okay, connectivity. We are going to verify connectivity. So connectivity को verify करने के लिए, so what we do is from this PC0 we are going to ping this laptop on and we'll check connectivity. Okay, so this laptop on IP address you need to know. Click on this PC0. Under desktop you can find the command prompt. Click on it and type the ping command and type the laptop on IP address which is 100.2. Press enter. Can you see you are getting reply? Yes, sir. How many packets you have sent? 4. Received?
4 and received 4. So 100% success is there. Yes, 100%. Then we are going to ping from PC0 to PC1. So what is the PC1 IP? PC1 100 dot 192 dot 100.3. You can see the reply you are getting. yes, sir. So it means it's working. Similarly, from this PC we are going to ping our gateway. So gateway IP is 1. 192.168.0.1/20. Yes, sir. Ping, getting the reply. Yes, sir. Yes, sir. Is it 4? It means in LAN 1 we can communicate to all the machines. Similarly, we are going to do the same thing from servers. And, yes, sir. So from this server, go to the command prompt. Command prompt. I'll change server to gateway. So what is the gateway? 103.1. 103.1 is the gateway IP, right? Ping. See that reply? Send 4, received 4. It's working. From this server, we are going to ping this server now. So what is this server IP? 103.3. Getting the reply? Send 4, received 4. So it means LAN 4 also is working. Now we are going to ping from gateway 1 to this router 1 in LAN 2. So open your gateway 1. You are in the configuration mode. You have to go to the privilege mode. So say exit. This is your privilege mode. From here, type the ping command. Ping this IP 101.2. That is IP. So success rate is how much? 80%. 80%. How many packets you have sent? 5. We have sent 5 packets. 4. But we have received 4 replies. Can you see the 4 replies here? Yes. This exclamation 4 symbols means what? 4 replies. And this dot means what? Packet loss. Okay. So 1 packet is lost, 4 replies we have received. So for the very first time, when you do the ping test, always you will see like this. Ping the second time the same IP. Now how much you are saying percentage? 100%. We have sent 5 packets. We have received 5 replies. Take the screenshot of it. Taken? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now do the ping test from router 1 to this gateway to router in LAN 3. So open router 1 and type this ping command. So you are in the global configuration mode. Go to the privilege mode first and type the ping command 192.168.102.2. So first time you are doing ping, you will get 80% success. Do the ping test again. You will get 100%. So it means that you can communicate within your LAN all these machines. But if you are trying to communicate from PC0 to this server here, which is in different LAN, then this communication will not happen. Okay. So PC0, it is in different network. This server, it is in different network. And by default, this communication will not happen. So let's do the ping test from PC0 to this server IP. Ping 192.168.103.2. So we are pinging from PC0 to server 2. That is the server 2 IP. You can see destination host unreachable messages coming, right? So how many packets you have sent? 4. How many packets you have received? 0.
all the 4 packets are lost, right? 100% loss. And 100% loss. So this loss, it should happen. Why? Because this is a different network machine, and our machine, it is in different network. And by default, this communication, it will not be allowed. Why it is not allowed? Because here this router is not doing any type of routing. Okay, these routers, they are not performing any type of routing. Okay, without routing, you cannot communicate from one network to another network. Okay, so what is routing? Routing is nothing but taking information from one network and delivering it to another network. Okay, this is what we call the process as routing. When your routers perform routing, then they will take informations from LAN 1 and they will deliver it to different networks. Yes. So how exactly this routing it needs to be done? Because we want to communicate to this particular server. We are not seeing any communication, receive is 0. So we need to make the communication. And how to do it? This is when we discuss about routing. Okay. So routing is nothing but the process of transferring a packet of information from one network to different network. The process which is involved to take in information from one LAN and delivering it to another LAN. This is what we call routing. So who basically performs the routing? That is your router. Okay, which is a network layer device. And always it is responsible for performing routing, because routing function, it is inbuilt in your network layer. Since router comes in network layer, that is why it has to perform routing. Okay. So how this router performs routing, that is, it builds a routing table. Okay. Every single router, they build a routing table in which they contain the best path informations about destinations. Means how to communicate to those destination networks like LAN 4, LAN 3, LAN 2. How to communicate. These route informations are stored in every single router's routing table. Okay. For example, if any information comes from LAN 1 to gateway 1, then how to deliver it to LAN 2, how to deliver it to LAN 3, how to deliver it to LAN 4. The best route informations are stored in every single router's routing table. Okay. So what is the best route to reach LAN 4 from gateway 1? What is the best route to reach LAN 3 from gateway 1? This is the information that is stored दर्द करने in the लगेगी routing. कमर, उस पर लेट जाइए, कमर दर्द करने लगेगी, So लेट when it जाइए, comes to routing, we have 3 मोबाइल types of हटाकर routing. लेट One is जाइए, called static, one is called लेट dynamic, जाइए, one is called default. 3 types of routing we लेट have. जा, And you can configure any of this type of routing in your router. लेट जा. Okay. Static routing basically says manual routing. Manual routing means you will have to manually configure it. Means you will have to tell your router how to reach LAN 4. You will have to tell your router how to reach LAN 3. All these things you will be doing it manually. And when you do manually all this routing on your routers, it always consumes time. Because when the network is getting bigger, this is when you will be facing problems configuring static routing. Right now I am having only 3 routers in my topology. So it will not be too much time consumption for me to configure these 3 routers. Imagine your topology having 30 routers. 30 routers. So configuring routing for all the 30 routers manually, always it will be taking time, because you will go to each and every single of these 30 routers and you will have to configure static routing. Means you will have to manually tell your router how to reach all these LANs. You will have to manually tell your router how to reach all these LANs. So this is what always is time consuming. Okay. Why? Because you will have to do the configurations of all these networks and you will have to configure static routing. So when the network is getting bigger, it is very much problematic for network admins to configure static routing, because they have configured it. Okay. Network administrators, they actually configure it. So when you will be joining the organization, you will be working under network admins. They will give you the instructions
and you will configure static routing as per their instructions. Okay. So on which router, what static routing you will need to configure it. They will give you the guidance, and based on their guidance, you will configure it. But manually, when you configure routing like this on routers, always it will be taking time when the network size is large. So that is when dynamic routing comes in, where routers, they build their routing table automatically using routing protocols. Means dynamically, every single router will automatically build this routing table. Because routers need this routing table. Without routing table, they cannot perform routing. Okay. In static routing, you are manually building the routing table. That is why it is taking time when the network size is big. But in dynamic routing, routing table is automatically built. Okay. Using these dynamic routing protocols. So these routing protocols you are going to be using in dynamic routing to perform your routing automatically between routers. So these three protocols are very much popular and it is being used in the organizations. One is called RIP, Routing Information Protocol. One is called Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP, and OSPF, often shortest path first. These are three very popular and common dynamic routing protocols we have in organizations. So most of the organizations, they're using these three protocols. That is why we are having it in this module. These three protocols, we'll see how to do configurations and all this. But dynamic routing and static routing, this is what you are having the difference. When your network size is big, you cannot manage it using static routing. This is when you do dynamic routing. And when you use dynamic routing, this is when you use routing protocols to perform dynamic routing. Okay. So what happens over here in dynamic routing, that is every single router's routing table every single router's routing table, it will be shared. Means this router will share it with router 1, router 1 will share it with gateway 1. Router 1 will share it with gateway 2, gateway 2 will share it with router 1. These are basically sharing of routing table which will happen. Okay. Every single routers, they will be टहल ला sharing their थोड़ा routing table. And when they गप्पू share भैया it, this is थोड़ा how टहल exactly लीजिए, dynamic routing is being performed. Okay. इसी में टहल लीजिए थोड़ा. So routers always build their routing tables. In static routing, this routing table is not shared. That is why we need to manually update the routing table of each and every single routers, which consumes time when the network is getting big. But when we use dynamic routing, then routers automatically they start to share this routing table informations automatically. So here you don't have to manually define it, all the routing, because it is taken care of by dynamic routing protocols. Okay. So dynamic routing always is done using dynamic routing protocols. Okay. And when you run it on your router, routing table always will be shared between all the routers. There is also another type of routing, what we call default routing. And default छोटे को भी routing हम is बता much लो, more used in this type of छोटे जाए ना वो ना situations बताइए. where we have our private network, that is हाँ our तब वही 6 बजे उठ LAN, गए. okay, our LAN, ठीक है, where we have our PCs, जा we have घूम our laptops, we have घूम our ला, servers in our घूम ला, LAN, कितना सुते पूरा रात सुते के बाद घूम ला. which is connected to internet. So this is our internet, which is basically provided to us by the ISP. So they are giving us this connection, which is connected to the router here. So this is our router, which is connecting to this ISP's network internet. So from these systems, if we want to communicate to any network on internet, because on internet you are having billions of networks out there, any network on internet, if you want to communicate from your LAN, this is when we configure default routing on the router. Okay, default routing. You configure this default routing on your router. Now, what this default routing does, that it enables your communication from your
machines in your network to any network machines on internet. Okay, so here we are not specifying that we want to communicate to a certain network. We are specifying on the router that from our machine, if I want to communicate to any network on internet, then I should be allowed to communicate. So this is when default routing is configured. It's a basically real-time scenario in which when we take connection from our ISP, that is our internet service provider, and they give us a connection to our router directly here. We configure this default routing directly on the router, and we enable the communication from our machines to any network on internet. So this is a special situation in which we use default routing, okay, in real time. But it doesn't mean that only in this situation you can use it. You can use it in your network as well. Okay, we'll see this default routing how it is performed in the project. सर एक बार हिंदी But में this एक्सप्लेन is कर दो. okay. ये तुम्हारे लैन है, ठीक है, ये तुम्हारा प्राइवेट नेटवर्क है जिधर पे तुम्हारे पीसी लैपटॉप सर्वर्स ये सारे हैं. ये तुम्हारे मशीन्स जिस राउटर से कनेक्ट हो रहा है ये तुम्हारा राउटर है. ये राउटर जो है ये तुम्हारे आईएसपी से कनेक्ट हो रहा है जो कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. अभी तुम्हारे मशीन से अगर तुम किसी भी नेटवर्क पे पहुंचना चाहते हो इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस ऑफ नेटवर्क, अभी कौन सा भी नेटवर्क पे तुम्हें कम्युनिकेशन करना है तुम्हारे मशीन से, तो फिर तुम डिफॉल्ट राउटिंग यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हो. ओके, तो ये जो डिफॉल्ट राउटिंग होगा ये तुम्हारे राउटर पे तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, और ये राउटर पे कॉन्फ़िगर करने से ये जितने भी मशीन तुम्हारे नेटवर्क पे है वो कौन से भी नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन इंटरनेट. ओके, तो ये जो सिचुएशन होते हैं ये स्पेशल सिचुएशन पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग. ओके, हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता, किसी किसी सिचुएशन पे हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. और ये एक रियल टाइम सिचुएशन है जिधर पे आईएसपी हम लोग को कनेक्शन देता है इंटरनेट के, और जब भी हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने मशीन से कौन सा भी नेटवर्क पे ऑन इंटरनेट, देन वी कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउटिंग. ओके, तो डिफॉल्ट राउटिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस पे भी हम यूज करते हैं. कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशंस पे ज्वाइन करो तो उधर पे तुम्हें डिफॉल्ट राउटिंग देखने को मिलेगा, स्टैटिक राउटिंग देखने को मिलेगा, डायनामिक राउटिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सारे मिक्सअप करके यूज करते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायनामिक राउटिंग यूज करते हैं या फिर स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं, सारे मिक्स करके यूज करते हैं. दैट इज व्हाई वी नीड टू नो ऑल दिस थ्री टाइप्स ऑफ राउटिंग. इसका स्क्रीनशॉट लो ऑल ऑफ यू, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Done, sir. टेकन. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं और डिफॉल्ट राउटिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे. In the next session, we will focus on dynamic routing. But today we are going to see how to configure static and default routing. जैसे कि तुम्हारा स्टैटिक राउटिंग मैनुअल राउटिंग है, तो मैनुअली तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है सारे राउटिंग इन योर राउटर्स. सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, तुम्हारे टोपोलॉजी को देखना है अच्छी तरीके से, और टोपोलॉजी को देख के ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे टोपोलॉजी पे कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है एंड कौन कौन सा नेटवर्क नॉट कनेक्टेड है तुम्हारे राउटर के साथ. जैसे कि ये टोपोलॉजी पे हम लोग के पास 3 राउटर्स हैं, गेटवे 1, राउटर 1 एंड गेटवे 2. इन राउटर्स को देखना है और कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं ये पहले फिगर आउट करना है. तो गेटवे 1 का कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? फिर मैं गिर जाऊं. LAN 1 and LAN 2. These two are connected networks, right? Yes, sir. So write this in a notepad. LAN 1 and LAN 2. What is the network ID of LAN 1? 100.6. And what is the network ID of LAN 2? 192. 192.168.1.0. Similarly, router 1 के network connection कौन से है? टोपोलॉजी देखो, ये रहा राउटर 1, इसका कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? LAN 2 and 3. राइट, सो नेटवर्क आईडी देख लो 101.0 है और ये 102.0, तो लिख लो ये इधर पे LAN
2 and LAN 3. 192.168.1.0. सर 2 राइट, और ये हो गया 102, 2 ठीक है। और लास्ट वाला राउटर कौन सा है? गेटवे 3 2 कनेक्टेड नेटवर्क्स। अभी गेटवे टू का कनेक्टेड नेटवर्क्स देखो किधर है। ये रहा गेटवे टू, कनेक्टेड कौन सा है? LAN 3 LAN 1 3 और LAN 4। तो लिख लो इधर पे गेटवे टू का कनेक्टेड नेटवर्क्स LAN 3 और 4। तो ये रहा LAN 3 का नेटवर्क आईडी 102 और ये रहा तुम्हारा LAN 4 का, राइट 103। ठीक है, तो ये कनेक्टेड नेटवर्क्स निकाल लिया। अभी नेक्स्ट क्या निकालने हैं? नॉट कनेक्टेड नॉट नेटवर्क्स। कनेक्टेड तो गेटवे 1 नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स। देख लो टोपोलॉजी अच्छी तरीके से। LAN 1 LAN 2 कनेक्टेड है, मतलब LAN 3 LAN 4 नॉट कनेक्टेड है, राइट? है कि नहीं? अगर गेटवे 1 के साथ LAN 1 और LAN 2 कनेक्टेड है तो टोपोलॉजी तो हम लोग का 4 लेंस का है ना, 4 लेंस का है, जिनमें से LAN 1 LAN 2 कनेक्टेड है, तो LAN 3 4 नॉट कनेक्टेड है, करेक्ट है कि नहीं? यस सर तो यही LAN 3 4 के नेटवर्क आईडी लिख लो इधर पे। तो ये रहा तुम्हारा LAN 3 LAN 3 and LAN 4। So that is LAN 3 का नेटवर्क आईडी डाल 102 और ये रहा LAN 4, ठीक है। ये हो गया LAN 3 4। सिमिलर चीज तुम्हें राउटर 1 के लिए करना है। राउटर 1 नॉट कनेक्टेड, तो LAN 2 LAN 3 कनेक्टेड है, इसका मतलब LAN 1 and 4 नॉट कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर अगर ये दोनों LAN कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? LAN 1 नॉट कनेक्टेड है, LAN 4 नॉट कनेक्टेड है। यस सर। तो लिख लो ये इधर LAN 1 and LAN 4 LAN 1 and LAN 4। LAN 1 नेटवर्क आईडी और LAN 4 का कितना है? 103 ये हो गया LAN 1 और 4। अभी गेटवे 2 का कौन सा नॉट कनेक्टेड है? LAN 1 LAN 2 LAN 1 LAN 2 LAN 1 LAN 2 So that is your LAN 1 LAN 2 and LAN 2। LAN 1 का नेटवर्क आईडी 100.0 और 1 LAN 2 का कितना है? 101। 101 ओके, ये सारे तुमने निकाल लिए, राइट? कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग करने के लिए ये सब कुछ तुम्हें निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले अभी जो नेटवर्क तुम्हारा कनेक्टेड है तुम्हारे राउटर के साथ, उनके लिए तुम्हें स्टैटिक राउटिंग नहीं करना है। ओके, जो नेटवर्क तुम्हारे राउटर के साथ कनेक्टेड है उनके लिए स्टैटिक राउटिंग नहीं करना है। कौन सा नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग करना है? जो नॉट कनेक्टेड है। ओके, जो नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनके लिए स्टैटिक राउटिंग करना है। तो सबसे पहले तुम्हें सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना है। सोर्स तुम्हारा कौन है? गेटवे 1। डेस्टिनेशन कौन है? LAN 3। यही है ना नॉट कनेक्टेड? LAN 3। हाँ, तो देखो टोपोलॉजी देख, टोपोलॉजी पे सोर्स तुम्हारा इधर है और डेस्टिनेशन किधर है? LAN 3। अभी डायरेक्शन देखो, कौन सा डायरेक्शन पे LAN 3 है? सोर्स से लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड या राइट साइड पे? राइट साइड। तो राइट साइड पे कौन सा राउटर पड़ रहा है? राउटर राउटर 1 पर है, राइट? ये राउटर को हम लोग कहते हैं क्या? नेक्स्ट हॉप। ओके, ये नेक्स्ट हॉप मतलब ये तुम्हारा नेक्स्ट राउटर जो है इसको कहते हैं। अब इसका आईपी क्या दिख रहा है तुम्हें राइट साइड पे? 101.2, राइट? यस सर इसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट हॉप आईपी। ओके, ये राउटर को क्या कहते हैं? नेक्स्ट हॉप। इस राउटर के आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? नेक्स्ट हॉप आईपी। मतलब अल्टीमेटली क्या निकला बेसिकली? अगर हम लोगों को सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है
तो हम लोग कौन से राउटर के बारे जा सकते हैं? Router राउटर 1. right? We can go via router 1 to this LAN 3, right? So this is the next of IP we need to type here. तो इधर पे तुमने LAN 3 पे ये सबनेट मास्क के बाद तुम्हें टाइप करना है क्या? 192.168.101.2 यही है ना IP? Yes, sir. यही है। Next of इस नेटवर्क पे जाने के लिए यही है नेक्स्ट ऑफ IP। ठीक है। अभी तुम्हारा गेटवे 1 है सोर्स, डेस्टिनेशन कौन है? LAN 4. LAN 4। देखो अच्छी तरीके से सोर्स किधर है? सोर्स इज गेटवे 1, डेस्टिनेशन चेंज हो चुका है LAN 4, राइट? सो द डायरेक्शन इज व्हिच डायरेक्शन? राइट साइड। तो कौन सा नेक्स्ट ऑफ हम लोग यूज करेंगे? 102. नो 102.2 नहीं, क्यों 102.2? तुम्हारा डायरेक्शन के हिसाब से तुम्हारा राउटर कौन सा पड़ रहा है? राइट साइड 101.2 सेम आ रहा है ना, यही आ रहा है राइट साइड पे। हाँ, इसी को यूज करोगे। ओके, सो दिस इज द सेम आईपी एड्रेस 192.168.101.2। ठीक है, ये हो चुका है गेटवे 1 के नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। अभी राउटर 1 पे जाओ। देन राउटर 1 नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स। राउटर 1 अभी सोर्स है, डेस्टिनेशन कौन है? LAN 1। ठीक है, तो ये रहा सोर्स हमारा SRC मतलब सोर्स। तो डेस्टिनेशन है अभी LAN 1। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कौन सा आईपी पड़ रहा है? 101.1. हाँ, तो यही राउटर है, इसका आईपी 101.1। तो यही हम लोगों को इधर पे डालना है। ठीक है, उसके बाद राउटर 1 से अभी जाना है किधर? LAN 4। देखो सोर्स इधर है, LAN 4 इधर, राइट साइड में। तो राइट साइड कौन सा आईपी है? 102.2. 102.2। तो इधर पे डालो 102.2। ठीक है, अभी गेटवे 2 नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स। गेटवे 2 सोर्स है, LAN 1 डेस्टिनेशन। तो ये रहा तुम्हारा गेटवे 2 व्हिच इज सोर्स। अब ये रहा तुम्हारा डेस्टिनेशन। तो डायरेक्शन कौन सा है? Left side. तो आईपी क्या आएगा नेक्स्ट ऑफ आईपी? 102.1. 102.1। तो ये 102.1 डालो और अभी गेटवे 2 से LAN नंबर 2 Same आएगा. तो देख लो, ये रहा तुम्हारा डेस्टिनेशन। इधर से जाना है तुम्हें, सो सेम आईपी आ रहा है, राइट? 102.1। ठीक है, तो ये हो चुका है तुम्हारा नेक्स्ट आईपी एड्रेस। तो एक बार तुमने ये सारे नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया, उसके बाद क्या करना है? ये सारे LAN नंबर्स को हटा के आईपी रूट करना है। ये कमांड डाल के स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, आईपी रूट सारे जगह पे ये नंबर्स को हटा दो एंड कॉन्फ़िगर आईपी रूट। ठीक है, यही तुम्हारे नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स को तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज योर आईपी रूट कमांड। नाउ डू वन थिंग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? Yes. उसके बाद ये लो, लाइट की तरह एक्स्ट्रा चला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। डन। Yes. बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस तुम्हें अगर करना है तो सबसे पहले तुम्हारा आईपी कॉन्फ़िगरेशंस होना चाहिए। ये आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, ओके? तो मैं ये सारे लाइंस को कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये राउटर 1 के हैं।
और ये गेटवे 2 पे है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउटिंग के लिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? Yes, sir. Done, sir. Done. ठीक है, अभी राउटर 1 कर लो Done. और गेटवे 2 का ये फुल कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, टेकन राइट? Yes, Okay. sir. So Yes, already, sir. First already, already we have configured gateway 1, all these IPs, right? I will simply just copy these 2 lines. Okay. ये 2 लाइन कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा गेटवे 1 पे। Taken the screenshot, right? Nice. Yes, sir. गेटवे 1 पे जाओ Done और already. ये दोनों लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दो। So enable to डालो लगी करेंगे तो configure terminal। ओके, ये दोनों कमांड डाल के तुम्हें पेस्ट करना है इधर। पेस्ट कर दो। ये स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो चुका है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Done. टेकन? Yeah. अभी नेक्स्ट वाले राउटर पे जाओ, राउटर 1। राउटर 1 के ये लास्ट के 2 लाइंस कॉपी करो, पेस्ट कर दो राउटर 1 पे। enable configure terminal, paste। take the screenshot। Yes, sir. Done. ठीक है, Yeah, yeah. Yes, sir. then last router which is gateway 2। Gateway 2. so gateway 2 के configurations को copy करो and simply just paste it to gateway 2 router। enable config t भी डाल सकते हो। config t is the short form of configure terminal। ठीक है, Yes. ये भी यूज कर सकते हो या फिर config t भी यूज कर सकते हो, ये और भी शॉर्ट है। ओके, तो config t में डाल देता हूँ, पेस्ट कर देते हैं कमांड्स। टेक द स्क्रीनशॉट। Done. Done, sir. Everyone's taken, right? Okay. Yes, So sir. now we are going to say exit, and we are giving this command called show IP route। ओके, अब ये कमांड से क्या होगा, तुम्हारा राउटिंग टेबल जो है तुम्हारा राउटर का वो तुम्हें दिखने को मिल जाएगा। तो फिर तो ये दिख रहा है राउटिंग टेबल। Yes, sir. This is your routing table। Yeah. Okay. So total how many LANs we have? 4 LANs, right? 4 lanes. Yes. So that is our LAN number 1, that is LAN number 2, that is LAN 3, that is And LAN LAN 4, 4. right? This is gateway 2, right? Yes, sir. gateway 2 कौन-कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है? ये देखो 102 से कनेक्टेड है एंड 103 से कनेक्टेड है। 1 yes, sir. 1 ये देखो C दिख रहा है इधर पे, C। Yes, sir. Yes, sir. C का मतलब क्या है? कनेक्टेड। Yes, sir. ओके, और इधर भी दिख रहा है ना डायरेक्टली कनेक्टेड है, Directly connected. Yes, sir. राइट? लेकिन कौन-कौन से नेटवर्क से नॉट कनेक्टेड है? LAN 1 LAN 1. एंड LAN 2। LAN 2. तो इन्हीं के लिए हम लोग ने स्टैटिक राउटिंग किया है ना, है कि नहीं सर? Yes, तो ये sir. दिख रहा है S, इधर पे S लिखा है, S का मतलब क्या है? Static route. Static route। राइट, तो ये तुम्हें दिखाई देना चाहिए। ओके, राउटिंग टेबल पे दिखना चाहिए। तो तुम्हारे चारों नेटवर्क्स के इंफॉर्मेशन तुमने इधर पे डिफाइन कर दिया। ये इसका एक स्क्रीनशॉट लो ऑल ऑफ यू। टेकन? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. अभी जाओ अपने सिस्टम से पिंग करो इस सर्वर को। तो पहले हम लोगों ने पिंग किया था, राइट? वी डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई, Yes, sir. Yes, sir. राइट? अभी सेम आईपी को पिंग करते हैं फिर से। कॉपी करो, पेस्ट करो, पिंग करो। अभी रिप्लाई आ रहा है?
Yes, sir. Over. Yes, sir. We're receiving it, right? Yes, Let's sir. ping this IP. Server 1 का IP को ping करो. Server 1 का IP क्या है? 192.168.103.3.3. 103.3. देखो रिप्लाई आ रहा है कि नहीं? और पता है? आ रहा है, राइट? Yes, sir. ओके. तो देखो सैंड 4 हम लोगों ने 3 पैकेट को रिसीव किया है. फिर से पिंग करते हैं. Next loss, sir. Right now we are getting all the 4 packets, right? Oh, Replies, yes. 0% loss. So it means what? Your static routing is working. Okay. क्योंकि ये मशीन जो कि LAN 1 पे है, इस नेटवर्क पे, ये अभी कम्युनिकेट कर रहा है कौन से नेटवर्क पे? LAN number 4 नेटवर्क के सर्वर पे. Okay. And these routers are successfully performing routing. That is how the communication is getting possible. Communication possible ही हो रहा है क्योंकि ये routers routing कर रहा है. Without routing, communication नहीं हो सकता. Okay. So ये तो हम लोगों ने मैन्युअली डिफाइन करके दिया है. Okay. अभी जब डायनामिक राउटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे इन्फॉर्मेशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे राउटिंग टेबल पे. जैसे ये राउटिंग टेबल पे दिख रहा है ना ये सारे, दिस नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इट विल कम. ओके, वो देखेंगे, कल देखेंगे. बट अभी फिलहाल हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग क्या है वो देखते हैं. ओके, व्हाट इज डिफॉल्ट राउटिंग एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर इट. सो डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट 3 more LANs. ओके, ये तो हम लोग के 4 LANs हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट 3 more LANs हियर. ओके, एक राउटर लेते हैं इधर, एक राउटर लेते हैं इधर, एक राउटर लेते हैं इधर. 3 LAN बनाएंगे नया. सो कनेक्ट दिस राउटर विद दिस राउटर 0/1. ये एक LAN हो गया इन दोनों राउटर के बीच में. देन कनेक्ट दिस वन टू दिस वन. ये दूसरा LAN हो गया इन दोनों राउटर के बीच में. अभी तीसरा LAN गेटवे 1 के साथ क्रिएट करेंगे. ओके, लेकिन अगर मैं केबल को सिलेक्ट करता हूं तो देखो ये ऑक्सिलरी कंसोल पोर्ट आ रहा है, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स नहीं आ रहे. ओके, बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट यू आर हैविंग 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स ऑन योर राउटर. ओके, एक फास्ट इथरनेट 0/0 होता है, दूसरा फास्ट इथरनेट 0/1 होता है. 2 पोर्ट ही मैंने यूज कर लिया तो बाकी पोर्ट बचा नहीं जिससे मैं गेटवे 1 के साथ कनेक्ट कर सकूं. So that is when we need to add ports. Okay, अगर तुम्हारे पास पोर्ट की कमी है then you can add ports in your router. तो पोर्ट ऐड कैसे किए जाते हैं? That is basically done using modules. Okay, ये modules होते हैं. सबसे पहले तो अपने राउटर को ऑफ करो. Okay, ये पावर बटन ऑफ करो उसको और इधर से तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला मॉड्यूल सिलेक्ट करना. ये मॉड्यूल से तुम्हें 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स मिल जाएंगे. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7. इसको ड्रैग करके इधर पे ड्रॉप कर देंगे. तो ये देखो 2 पोर्ट्स तुम्हारे फास्ट इथरनेट के ऐड हो चुके हैं. सो व्हेनेवर यू नीड ports, additional ports to connect your router to other devices, always use these modules. Okay, इनको इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्विच ऑन कर दो राउटर पे. तो क्या होगा, तुम्हारा पोर्ट सेट हो जाएगा. दिख रहा है इधर पे फास्ट इथरनेट 1/0, फास्ट इथरनेट 1/1. all of you can see, right? This is your 0/0/0/1, then 1/0 and 1/1. These are 2 ports which we have added. Okay, तो ऐसे ही करके तुम्हें इधर पे भी ऐड करना है पोर्ट्स को. तो इधर पे मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी किए हुए हैं इधर पे, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग वगैरह किए हैं. तो पहले मैं कॉन्फ़िग पे जाऊंगा, सेव कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशंस. तो इधर से सेव कर सकते हो अपने कॉन्फ़िगरेशंस को. अगर सेव नहीं करते हैं और राउटर को ऑफ कर दिया, ये बेसिकली तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशंस डिलीट हो जाएगा. ओके, तो इसी वजह से इधर पे जाके तुम्हें सेव करना है. उसके बाद तुम्हें राउटर को ऑफ करना है एंड ड्रैग दिस मॉड्यूल, ड्रॉप इट हियर. उसके बाद ऑन कर दो. ओके, तो इससे तुम्हारा 2 पोर्ट सेट हो जाएंगे. तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे क्रॉसओवर केबल को सिलेक्ट करो, कनेक्ट कर दो इस वाले से. ओके, तो ये जो हो चुका है तुम्हारा नेटवर्क ऑलमोस्ट क्रिएटेड है.
अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा LAN 4 है, इससे कॉपी कर देंगे सारे एड्रेसेस, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे, इधर पे LAN 5 डाल देंगे इसको, और थर्ड ऑक्टेट को चेंज कर देंगे, 104 कर देंगे इसको, 104। सिमिलरली इधर पे हम लोग LAN 6 बनाएंगे और इसको 5 कर देंगे, थर्ड ऑक्टेट 105, और इधर पे LAN नंबर 7 क्रिएट करेंगे और इसको डाल देंगे 106। तो ये तुम्हारे 3 न्यू लेंस ये ऐड हो चुके हैं तुम्हारे टोपोलॉजी में। तो अभी आईपी एड्रेस हम लोग देंगे LAN 5 पे, इधर पे 104.1 आएगा, इस साइड पे 104.2, फिर इस वाले इंटरफेस पे आएगा 105.1, 105.1, इस वाले इंटरफेस पे आएगा 105.2, इस वाले इंटरफेस पे आएगा 106.1 और इस वाले पे आएगा 106.2। Okay, so once we have defined all these port numbers and IP addresses, next thing you need to do the configurations. Okay, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले तो अपने नोटपैड निकाल लो। ओके, तो ये रहा हम लोग के नोटपैड, जिसमें ऑलरेडी स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने किया हुआ है। इस पे जाते हैं, दिक्कत होला साला वापिस तो करे ना सर, लेकिन छोड़बा ना कंपनी। इधर पे तुम्हारा राउटर 0 ऐड करो, राउटर 0 कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले एनेबल डालो, कॉन्फ़िग डालो, होस्ट नेम आएगा तुम्हारा राउटर 0। अभी सबसे पहले तुम्हें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, ये वाला 1/0, तो इस पे इंटरफेस डालो, फिर पे 1/0, आईपी एड्रेस है इसका 192.168.104.2, सबनेट मास्क है ये, देन गिव नो शटडाउन कमांड, दैट्स इट। ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी नेक्स्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करो, दैट इज 0/0, तो इधर पे डालो सेम कमांड, इंटरफेस 0/0 IP 192.168.105.1 उस सबनेट मास्क है, नो शटडाउन एग्जिट। ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी नेक्स्ट इंटरफेस डालना है तुम्हें 0/1, तो ये रहा तुम्हारा इंटरफेस FS0/1, IP एड्रेस 192.168.106.1, सबनेट मास्क इज दिस, नो शटडाउन एंड एग्जिट। तीनों इंटरफेस हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी नेक्स्ट वाले राउटर पे जाएंगे, राउटर दैट इज आवर राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन। We are going to say enable config hostname router 2। अभी इसका इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस FS0/1, तो इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आईपी एड्रेस डालो 192.168.105.2, सबनेट मास्क डालो, नो शटडाउन एंड एग्जिट। एक ही इंटरफेस है, तो ये इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अभी नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट राउटर कौन सा है, ये वाला राउटर है, राउटर 3, तो इसको कॉन्फ़िगरेशंस इधर पे डाल देना है। सबसे पहले एनेबल, फिर कॉन्फ़िग, फिर होस्ट नेम राउटर 3, फिर इंटरफेस डालना है, इंटरफेस FS0/0, आईपी एड्रेस डालो 192.168.106.2, सबनेट मास्क, फिर नो शटडाउन एंड एग्जिट। ये हो चुका है तुम्हारे इस इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्हीं सबको मैं जाके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ राउटर पे। तो सबसे पहले डालो नो, पेस्ट कर दो सारे कमांड्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये राउटर 3 के कॉन्फ़िगरेशंस हैं।
सर प्लीज बैक इट. कौन सा? Sir, I will take a screenshot. Okay, you want to take the screenshot? Take it then. This is your router 3 configurations. Okay. Taken, right? Okay. अभी राउटर 2, ये राउटर 2 पे जाके कॉपी पेस्ट करो सारे कमांड्स. नो, राउटर 2 के कॉन्फ़िगरेशन है ये, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो राउटर 2 पे. टेक द स्क्रीनशॉट. Done. Yes. Then our next router, which is router 0. So that is our router 0 configurations. Copy and go to router 0 and paste it. तो ये रहे तुम्हारे राउटर 0 के कॉन्फ़िगरेशंस. Take the screenshot. Done. Yes sir. ठीक है. अभी इस वाले जो पोर्ट है ना गेटवे 1 पे, इस वाले पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करना है. ये वाईफाई 1/1 क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 0/1 0/0 को कॉन्फ़िगर किया है. ये पोर्ट बाकी है. So first of all we'll say config, then interface FA 1/1 IP address डालो 192.168.1.1 subnet mask and say not shutdown and say exit. ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने इस पोर्ट का किया है गेटवे 1 पे. टेक द स्क्रीनशॉट. Taken. Yes, everyone taken the screenshot. Yes sir, done sir. Done. Yes sir. ठीक है. तो अभी क्या करना है तुम्हें स्टैटिक राउटिंग करना है सारे राउटर्स पे, जैसे गेटवे 1 राउटर 1 गेटवे 2 राउटर 0, ये चारे राउटर्स पे तुम्हें स्टैटिक राउटिंग करना है. और डिफॉल्ट राउटिंग तुम इधर पे करोगे. डिफॉल्ट राउटिंग. So what we are doing here, that is we are combining the static routing and default routing. Okay. In gateway 1, router 1, gateway 2 and router 0, we are doing static routing. But in these two routers, we are doing default routing. Okay. So first of all, we need to find out which are the not connected networks. Okay. In चारों routers के not connected networks को निकालो पहले. तो इधर पे हम लोगों ने निकाला था ऑलरेडी गेटवे 1 के नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स. ये तो कनेक्टेड हो गया ना. हाँ, तो इधर पे नॉट कनेक्टेड कौन कौन सा है? LAN 1, LAN 2 और एक नेटवर्क है जिससे कनेक्टेड है LAN 5. करेक्ट. LAN 5 से भी कनेक्टेड, राइट? 10.4.0. तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग ये जो राउटर है कौन कौन से नेटवर्क से नॉट कनेक्टेड है? LAN 3 से नॉट कनेक्टेड है, LAN 4 नॉट कनेक्टेड, LAN 6 and LAN 7. Correct? Yes, sir. Because total we are having how many networks? Total 7 LANs we have, right? Out of 7 LANs, if this router is connected to only 3 LANs, it means the remaining LANs are not connected. Correct or not? LAN 1, 2 and 5 से connected है, इसका मतलब क्या है? LAN 3, 4, 6 and 7 से not connected. तो ये LAN 3, LAN 4 के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग किया हुआ है. अभी LAN 6 and 7 के लिए 6 and 7 का डायरेक्शन कौन सा है? डाउन है ना.
Yes. डाउन डायरेक्शन है, राइट? Yes. तो डाउन डायरेक्शन पे कौन सा राउटर है? 104 पॉइंट राउटर मला 0. तिकडून सुती नाही आहे तुम्ही 104.2 ये काम करी दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट ऑफ आईपी. ओके, तो इधर पे हम लोग लिख लेंगे. सबसे पहले तो कॉपी कर देता हूँ मैं 2 बार. ओके, और इसका नेटवर्क आईडी 6 के नेटवर्क आईडी क्या है? 105 है, राइट? और इसका क्या है? 106. ओके, सो 105 या 106 पे जाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट ऑफ आईपी कौन सा होगा? 104.2. Correct? Yes, so that is our 2 static routes. So total we have what? 4 static routes plus 3. Total 7, right? Yes. Yes. So we're going to configure all these things in gateway 1. Okay. Now we're moving on to router 1. So router 1 पे देख लो. Connected कौन कौन से है? LAN 2, LAN 3. LAN 2, LAN 3. इसका मतलब 7 LANs में से सिर्फ 2 LAN ही connected है. मतलब कितना LANs not connected है? 5. 5 LANs are not connected. So LAN 1, LAN 4 not connected. LAN 5, 6, 7 is also not connected, right? Right. Yes or no? Yes. Router 1 is not connected to LAN 1 and LAN 4. And similarly, these 3 LANs it is not connected. तो इनके नेटवर्क आईडी इधर पे डालो. या आईपी रूट कमांड डाल के 3 बार पेस्ट करो. 1, 2, 3. अभी इसका नेटवर्क क्या है? 104, 105, 106. तो ये जो तीनों जो डेस्टिनेशन है, ओके, ये तीनों डेस्टिनेशन जो है, ये तीनों डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ये राउटर कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा? इसी पे, राइट? 101.1, right? So that is what you are having the next of IP. So here पे 101.1. ये आ जाएगा. राउटर में 1 के नॉट कनेक्टेड. तो ये हो गया तुम्हारा राउटर 1 का. अब गेटवे 2 का देख लो. गेटवे 2 LAN 3 and 4 से कनेक्टेड है. इसका मतलब कौन कौन से नॉट कनेक्टेड है? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. तो 1 and 2 के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? 5, 6, 7 के लिए तुम्हें देना. 1, 2, 3. So that is your 104, 105, 106. और नेक्स्ट कौन सा होगा? सेम ही होगा, राइट? 102.1. 02. सेम. ठीक है. अभी तुम्हारे नेक्स्ट राउटर कौन सा है? राउटर 0. तो राउटर 0 का कनेक्टेड नेटवर्क निकाल दो. कौन कौन से कनेक्टेड है? Gateway 1 से and राउटर 0 कनेक्टेड. So LAN 5 से कनेक्टेड है, LAN 6 से कनेक्टेड है, and LAN नंबर 7 से कनेक्टेड है, राइट? LAN 6 का क्या है? 105. and LAN नंबर 7 का क्या है? 106. ये कनेक्टेड है. तो कौन कौन से नॉट कनेक्टेड होगा? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, राइट? Yes, sir. तो ये हम लोगों ने कॉपी करते हैं. ये 4 लाइन को कॉपी कर देते हैं, इधर पे पेस्ट कर देते हैं. तो इसको चेंज कर देते हैं 100. इसको चेंज करते हैं 1, 2 and 3. 3. That is LAN 1, 2, 3, 4, right? Yes, sir. नेटवर्क आईडी. अच्छा, तो इस पे इन चारों नेटवर्क्स पे जाने के लिए कौन सा नेक्स्ट स्टॉप होगा? 104.1. That's it, right? Completed. अभी तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, ओके, सारे के. तो गेटवे 1 पे जाओ, कॉपी कर दो सारे, पेस्ट कर दो. पेस्ट. Take the screenshot. That is gateway 1. Taken.
Yes. Okay. Then the next router is router 1. Copy करो. Router 1 पे जाओ. Say enable config and paste it. That is router 1. Taken. Everyone taken the screenshot. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अब gateway 2 कॉपी कर लो सारे कॉन्फ़िगरेशंस पेस्ट कर दो. config key. Take the screenshot. Done. Then router 0 के कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी करो and paste कर दो. Copy, paste. Take the screenshot. ये हो चुके हैं तुम्हारे सारे राउटर्स के स्टैटिक राउटिंग. अभी तुम्हें राउटर 2 और राउटर 3 पे you will have to configure default routing. Okay. Default routing करना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. Okay. Taken right? The screenshot. Yes, sir. ठीक है. तो सबसे पहले जाओ अपने राउटर 2 पे और इधर पे जाके enable डालो config और IP root कमांड डालो. ओके. उसके बाद तुम्हें 4 zeros देना है. 4 zeros. 4 zeros का मतलब होता है कि any network एड्रेस. अगर तुम्हें राउटर 2 से कौन सा भी नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना है तो 0.0.0.0 यही कॉन्फ़िगर करना है. तो 0.0.0.0 ये सबनेट मास्क होता है. मतलब एनी नेटवर्क एड्रेस एनी सबनेट मास्क इफ यू वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम राउटर 2. तो तुम्हारा नेक्स्ट हब कौन सा होगा? Which device is the next hop? IP number of this. कौन सा राउटर है नेक्स्ट हॉप? 104.1 नो 193.168.105.1 है ना कनेक्टेड है. राउटर 2 से अगर तुम्हें कम्युनिकेट करना है तो कौन सा राउटर के जरिए करोगे? राइट साइड पे कौन सा राउटर है? 1051. यही है ना राउटर 0. Router 0. इसी के जरिए तो कम्युनिकेट करोगे. करेक्ट. Yes, sir. Middle. हाँ. तो राइट साइड के डायरेक्शन पे कौन सा आईपी पड़ रहा है? 105.1. Yes. हाँ 105. यही आ रहा है ना 105. हाँ. ये तुम्हारा राउटर 2 है और तुम्हें राइट साइड पे कम्युनिकेट करना है ना. ये सारे नेटवर्क्स तो राइट साइड पे है. करेक्ट. इन द राइट डायरेक्शन. यही कॉन्फ़िगर कर देना है. ओके. टेक द स्क्रीनशॉट. टेकन. Yes, sir. अभी राउटर 3 पे जाते हैं. राउटर 3 पे देख लो. राउटर 3 से तुम्हें अगर सारे नेटवर्क्स पे कम्युनिकेट करना है कौन सा नेक्स्ट स्टॉप होगा? 106.1 इसको इधर पे डाल देना. लेवल कॉन्फ़िग IP रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.106. ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट. ये हो चुका तुम्हारा डिफॉल्ट राउटिंग. अभी राउटिंग के भी चेक करो. एग्जिट शो IP रूट. तो डिफॉल्ट राउटिंग बेसिकली स्टैटिक राउटिंग जैसा ही है. इधर पे हम लोग नेटवर्क एड्रेस और सबनेट मास्क पे 0.0 डालते हैं. ये दिख रहा है तुम्हारा स्टैटिक. ये स्टार दिख रहा है. स्टार का मतलब क्या है? कैंडिडेट डिफॉल्ट. बेसिकली ये डिफॉल्ट राउट को पॉइंट करता है. तो
कौन सा भी नेटवर्क पे जाने के लिए कौन सा भी सबनेट मास्क अगर उस नेटवर्क पे है उस पे जाने के लिए हम लोग ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस करके उसको कम्युनिकेट करेंगे। ओके, इस राउटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है, फॉर एनी नेटवर्क गिवन टू कम्युनिकेट you are always using the next hop address 192.168.106.1। तो देख लेते हैं अभी कम्युनिकेशन हो पाता है कि नहीं। ये हम लोगों के दो राउटर्स के आईपी हैं 105.2 एंड 106.2। इस मैसेज से हम लोग पिंग करेंगे इन दोनों राउटर्स को। सो पिंग 105.2 तो तुम्हें सक्सेस आना चाहिए। If your default routing, static routing, everything is working, you should get success. So request timeout, we are getting it. Can you see we are getting a reply? We have received one. Let's do the ping test again. 105.2. See that right now we are getting all the replies. Now we are going to ping the other router, which is 106.2. So that router is also giving us the reply. Okay, मतलब LAN 6 LAN 7 से तुम्हें reply मिल रहा है तुम्हारे LAN 1 पे। And similarly we can also ping our server IPs, which is 103.2. So that is our server IPs. दिख रहा है, रिप्लाई आ रहा है, राइट? यस सर। तो ये है तुम्हारे ओवरऑल प्रोजेक्ट, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और यही प्रोजेक्ट तुम्हें बनाने हैं, तुम्हें बना के मुझे कल बेसिकली दिखाना है। अंडरस्टूड? स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग तुम्हें करना है। सर फर्स्ट टाइम लॉस क्यों होता है सर? क्या फर्स्ट टाइम क्या है? लॉस होता है? पैकेट लॉस होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे कि तुम कम्युनिकेशन करते हो तो तुम्हारे डिवाइसेस को मैक एड्रेस निकालने पड़ते हैं। मैक एड्रेसेस पता नहीं होते बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन पे, तो इसी वजह से मैक एड्रेस को निकालना पड़ता है, उसी वजह से लॉस होता है पैकेट। ओके, बेसिकली एक प्रोटोकॉल काम करता है मैक एड्रेस को निकालने के लिए, जिसका नाम होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसी की वजह से पैकेट लॉस होते हैं। ओके, 2-3 पैकेट लॉस होता है फर्स्ट टाइम। एक बार मैक एड्रेस निकल आते हैं तो फिर आराम से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, सर ये बनाने के बाद लिया इसको सेव कैसे करना है बता दो। सेव कैसे करना है? फाइल पे जाओ, सेव कर दो। ये प्रोजेक्ट तो फाइल पे इधर पे ही तुम्हें सेव का बटन मिलता है। ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन है सेव का, इधर पे फाइल पे सेव कर सकते हो, पूरा टोपोलॉजी सेव हो जाएगा। अगर तुम्हारे राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें सेव करना है तो कॉन्फ़िग पे जाओ, इधर पे सेव का बटन मिलेगा, इधर से सेव कर लो कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, यस कि एप्लीकेशन पे आगे मिल जाएगा ना सेकंड टाइम देखेंगे सेव करने के बाद सेव। हाँ वही तो, ये तो मैं राउटर के जब कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो सेव करके फिर तुम्हें करना है। ओके, इधर पे सेव करो पहले, उसके बाद सेव प्रोजेक्ट करो। ओके, इधर पे तुमने सेव कर दिया और उसके बाद तुमने इधर पे सेव किया। ओके, कॉन्फ़िगरेशंस तो सेव नहीं होगा। फर्स्ट यू सेव द कॉन्फ़िगरेशंस, देन ओनली सेव द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया, राइट? ऑल ऑफ यू 6 बजे चल ये Yes. राइट। यही प्रोजेक्ट में करके लाना है। सबसे पहले मैं कल यही देखूंगा, हाउ यू हैव डन द प्रोजेक्ट ऑफ दिस 7 months। कम्युनिकेशन तुम्हारा होना चाहिए, कौन सा भी मैसेज से पिंग करो, इन राउटर्स में से रिप्लाई आने चाहिए। ओके, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। सर यहाँ पर पिंग कर रहे हैं तो ना फायरवॉल ऑफ कर रहे तो कुछ जरूरत नहीं। फायरवॉल बेसिकली तुम्हें अगर तुम्हारे सिस्टम पे चलता है फायरवॉल तो बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसमें बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, ये तो सॉफ्टवेयर है।
ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे ये बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहेगा। 8 बजे पहले। लेकिन अगर तुम्हारे विंडोज मशीन पे तुम कर रहे हो जैसे कि प्रैक्टिकली, तो तुम्हारे विंडोज फायरवॉल को ऑफ करके तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फायरवॉल ऑफ करके तुम्हें हाँ पिंग तो करना ऊपर वाला पड़ेगा, अलग कर नहीं दो तो ना, दीदी फायरवॉल वाला पिंग को दीदी। ब्लॉक कर देता है। सर जब हम रियल टाइम तो में हाँ यो करेंगे डाल जब देना तो वही फायरवॉल में, ऑफ करना वही वाला। पड़ेगा यहाँ पर। ऑफ नहीं करना पड़ता, बेसिकली हम लोग रूल्स बना के पिंग को अलाउ कर हाँ देते हैं। वही चीज़ ओके, कहा और था ये कि बोनू को कस्टमाइज्ड वही में रूल्स यो होते हैं, डाल दो। ये सिक्योरिटी पॉलिसीज होते हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। विंडोज के फायरवॉल को, लिनक्स के फायरवॉल को, ये सारे फायरवॉल्स पे रूल्स बनाते हैं। ये फायरवॉल मैनेजमेंट पे हाँ ये हमने, कुर्सी। ये सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो जो भी करना है बेसिकली इनिशियली तो एंट्री लेवल पे तुम्हें बेसिकली ओकर फायरवॉल के फरिया साथ ले डील कुल नहीं देख करना ले, पड़ेगा। जब कोई तुम्हारा कहे के ना एक्सपीरियंस हो पड़ी, खुद जाएगा अलग कर ले। तो फिर डील करोगे। ओकर ओके, दिमाग नहीं खे। आपको बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, जनला उ कौन ये ले सब इतना ओकर काम दिमाग पे नहीं खे। मैं फोकस ये कौन करूंगा। सामान दो गोवा कौन है के गोवा। हाँ बोलो, किसको सवाल पूछने बोलो। ये प्रोजेक्ट का रियल टाइम वर्क कैसे रहेगा सर हमारा जब जाएंगे हम? रियल टाइम जब जो कर रहे हो इधर पे वैसा ही करना है यार। राउटर तुम्हारा ऐसा ही दिखेगा, यही राउटर है किसका, मतलब ये यही एप्लीकेशन पे कर राउटर रहे है, हो यही कमांड्स डालें। वहाँ सिस्टम पे करना पड़ेगा। सिस्टम करना पड़ेगा, और उसके लिए कैसे कनेक्ट करना है बाकी आएंगे सामने। ओके, इन द अपकमिंग सेशंस यू विल गेट टू नो अबाउट इट, कैसे कनेक्ट करना है सिस्टम से राउटर पे और कैसे मैनेज करना है। we'll सर हम talk सारे about it in राउटर्स को the device management। बोलो। हेलो, सारे राउटर्स को सर हम Yes, tell me। डिफॉल्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो, डिफॉल्ट राउटिंग बेसिकली कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट राउटिंग रिस्की होता है। डिफॉल्ट राउटिंग हमेशा प्रेफर नहीं किया जाता। ओके, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग प्रेफर किए जाते हैं मैक्सिमम टाइम। डिफॉल्ट राउटिंग का यूज कम किए जाते हैं जब तुम्हारा इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन देता है। मैक्सिमम टाइम उस सिचुएशंस पे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन ही बेसिकली तुम्हारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। हाँ तो जाके तो जब भी 6 उनका बजे तू राउटर जगले आईएसपी से रहते कनेक्ट हो। होता है तो उनके राउटर पे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यही कमांड्स है। ओके, तो सारे राउटिंग यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग यूज करना है या स्टैटिक राउटिंग यूज करना है। In organizations we are using all these three types of routing always। और किसको सवाल है? ओके सर, हम लोग करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप सॉल्व कर दोगे सर फिर? हाँ ठीक है। और किसको सॉफ्टवेयर पे कुछ इश्यूज आ रहे थे? From the in the beginning of the session someone is having the issues with the software। हाँ सिस्को पैकेट सर पे क्या दिक्कत आ रही थी राइट किसको? हाँ सर वो आ रही थी, उसको एक बार और Yes, चेक करके मैं कल फिर आपको दिखाऊंगा। सर मेरा चेक कर लेते क्या? मैं कल तक जो बताए थे आप लोग किया हो। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। हाँ ठीक ही तो है, करेक्ट है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया हो? मोहसिन तुम्हारा माइक म्यूटेड है। आईपी कॉन्फ़िगरेशंस हाँ सर आज बताए ना आप। वो आईपी कॉन्फ़िगरेशंस कर लेना, बाकी सब तो ठीक ही है। ओके, और जब भी कॉन्फ़िगरेशंस करो तो फिर बेसिकली सेव करो कॉन्फ़िगरेशंस को स्पेसिफिकली ऑन द राउटर्स। ठीक है, यू कैन स्टॉप योर सेशन। और किसी को कोई दिक्कत है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या फिर प्रोजेक्ट पे, ये टोपोलॉजी बनाने पे किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? एनीवन? सर ये FA01 और ये हम टेक्स्ट के थ्रू दे सकते हैं या ऑटोमेटिकली वो हो जाता है वहाँ? मतलब ये केबल जो सिलेक्ट कर रहे हो ये ऑटोमेटिक चाहते हो सिलेक्ट हो जाए? केबल नहीं है जो सर, हम FA0 या FA0/1 ये जो नेम बाय डिफॉल्ट रहता है, ये तुम्हारे राउटर का पोर्ट्स
ये राउटर के तुम्हारे पोर्ट्स हैं, अभी कौन सा पोर्ट यूज करके तुम कौन सा डिवाइस को कनेक्ट करोगे ये तो टोटली तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम चाहते हो 0/0 को यूज करके तुम इस स्विच के साथ कनेक्ट करो तो कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं उस पर। अगर तुम चाहते हो 0/1 को यूज करके तुम इधर पे कनेक्ट करो तो कर सकते हो, ये टोटली तुम्हारे ऊपर है। ओके, कौन सा पोर्ट से तुम कौन सा डिवाइस को कनेक्ट करते हो दैट इज टोटली अप टू यू, यू आर डिसाइडिंग इट। ओके, क्योंकि नेटवर्क तुम्हारा है तो नेटवर्क पे जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा वो तुम्हारा होगा। ओके, कंपनीज पे जब जाओगे तो कंपनीज के नेटवर्क पे काम करोगे तो कंपनीज का मैनेजमेंट का जो डिसीजन होगा वही तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है तुम्हारे राउटर्स पे, तुम्हारे लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर्स पे। ओके, तो वही इंस्ट्रक्शंस वही प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या तुम्हें करना है। ओके, और बेसिकली ये सारे तुम्हारे सीनियर इंजीनियर्स तुम्हें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशंस। और किसी को कोई सवाल? ये सारे स्क्रीनशॉट ले लिए था राइट? राउटिंग, बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, आईओएस। यस सर। एवरीवन इज टेकन राइट? यस सर। और कोई किसी को कोई सवाल है? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? अच्छा, सबनेटिंग क्लियर है राइट? यस सर। सबनेटिंग के जो क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने किए थे ये सारे क्लियर है कॉन्सेप्ट करेक्ट? यस सर। यस सर, सबनेटिंग क्लियर। ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि इधर पे सारे जगह पे हम लोग इधर ये देखो फर्स्ट क्रेडिट होस्ट, लास्ट क्रेडिट होस्ट, ये सारे एड्रेसेस यूज कर रहे हैं। ओके, so that is why it is always important that you don't forget subnetting. एक एग्जांपल हमेशा है, एक दिन पे एक एग्जांपल करने की ट्राई करो। ओके, कौन सा भी रिक्वायरमेंट लो, ओके अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट ले सकते हो, डिपार्टमेंट क्रिएट करके नेटवर्क एड्रेस डालो, कौन सा भी क्लास बी का हो, क्लास सी का हो, वो डाल के रिक्वायरमेंट को देखो। अगर हो तो ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाते हो तो मुझे दिखाओ, इन नेक्स्ट सेशन विल सी। ओके, तो ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है? ऑल राइट एवरीवन, सो ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन, what we are going to discuss that is called dynamic routing. Okay, अब dynamic routing पे specifically we are going to be focusing on these two protocols. One is called RIP and one is called EIGRP. Okay, specifically in this two protocols we see how to use it and perform dynamic routing with it. Okay, तो कल का सेशन भी फुल प्रैक्टिकल रहेगा, तो इसी वजह से अच्छी तरीके से ये स्टडी राउटिंग वगैरह प्रैक्टिस कर लेना। ऑलराइट, सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। अच्छा, नहीं है।